that show and welcome back to an amazing session of question and answer with फिजिक्स वाला। तो आज हम देख रहे हैं कुछ लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर क्लाइमेट। लेट्स मूव अहेड विद द क्वेश्चन। व्हाट आर द कंट्रोल्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया? तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। व्हाट आर द कंट्रोल्स? कंट्रोल्स आर बेसिकली कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे क्लाइमेट को कंट्रोल करती है, बेसिकली इफेक्ट करती है, यस और नो? सो कंट्रोल्स आर बेसिकली फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं किसको? क्लाइमेट ऑफ इंडिया को। तो लेट अस सी कि हमारा क्लाइमेट किन चीजों की वजह से इफेक्ट होता है। तो व्हेन वी लुक एट द मैप ऑफ इंडिया ऑन द ग्लोब, हमें पता है यहाँ से 0 डिग्री इक्वेटर पास होता है और इक्वेटर पे बहुत गर्मी होती है। बट हमें ये भी पता है कि एन इम्पोर्टेंट लाइन ऑफ लैटिट्यूड passes through the middle of India at 23.5 डिग्री नॉर्थ, करेक्ट? तो बिकॉज नाउ आधा इंडिया कहाँ लाई कर रहा है? बिटवीन द इक्वेटर एंड दी between the equator and the important line of latitude, that is 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो ऑब्वियसली इक्वेटर से क्लोज होने के वजह से क्या हो रहा है? यहाँ ज़्यादा गर्मी हो रही है। बट जैसे जैसे इक्वेटर से दूर जा रहे हैं हम, तो क्या हो रहा है? गर्मी कम होती जा रही है। तो नाउ बिकॉज एज द लैटिट्यूड चेंजेस, एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल, द टेम्परेचर changes, and now because India's part lies in this zone as well as this zone, that is why due to change in latitude the climate also changes as we go from south to north. Now the next part, the next point because of which we see change in climate in India is the altitude. Now what is altitude? Now if I go from a lower area to a higher area, say a plateau, and then to a hills and to the mountains. So as I move upwards away from the sea level, what happens? The temperature drops, and when the temperature drops, what happens? The climate changes. So in India, in the plains they have a different type of temperature, a different type of climate, and in the mountains, in the hilly areas, they have a different type of climate. Not only that, if we look at the structure of India, the location of India, India is a peninsular country. We are covered by sea on 3 sides. Now being covered from sea, obviously the sea has its impact on the climate of India. The places which lie close to the sea, they will not have extreme weathers. They will always have moderate weather. But as we move away from the sea, moving toward the northern area, here what happens? The extremity slows down. Yes or no? Here they will have extremity slows down or it goes upwards. Does it slow down or does it go upward? Yes, extremities increases. अगर गर्मी हो रही है तो भयंकर गर्मी होती है और अगर ठंडी होती है तो भयंकर ठंडी होती है। Yes or no? तो extremities लो नहीं होती, extremities बढ़ जाती हैं. That is why the distance from the sea is an important factor which affects the climate of India. Not only that, these sea, they generate a lot of ocean currents, and these are the ocean currents which bring the winds to India, causing rainfall during different part of the year, thus affecting the climate of India. Not only that, we have already studied that India is divided into 6 physical features, and because we have a lot of plateaus, plains, mountains, desert, hilly areas, we have coastal plains, we have islands. Because of these relief features, different type of climate is found in India. So these are the major factors which affect the climate of India. Those are latitude, altitude, distance from the sea, the ocean currents in the sea, and the different type of relief features that we find in India. I hope you are clear with the answer.